2 मिनट. Hi guys, welcome to Sports Pulse. मैं हूं आपका समीर एंड प्रीमियर लीग में 5 मैचेस हुए हैं अब तक. आई थिंक 2 टीमें हैं जिन्होंने शायद 4 मैचेस खेले होंगे या 4 टीमें इनफैक्ट. बट देयर हैज बीन अ लॉट हैपनिंग स्पेशली रिगार्डिंग वार and a few injuries. But ये कि VAR has obviously taken everything by storm, and people are very disappointed. Decisions favor में भी जा रहे हैं, against भी जा रहे हैं, but definitely people are not happy with what is happening. So इतना कुछ हो गया था 5 मैचेस के बाद के we thought कि we should definitely get the big six in, and we should do a show and discuss how the teams have progressed and how things have changed, और ये वार के साथ और ये crunch season के साथ कैसी नजर आ रही हैं चीजें. So to discuss all this, we have guests from Manchester City, Mumbai. Tariq is joining us. Kashif, supporting Arsenal, is joining us from Qatar. Abdul, Lateef hai hamare sath. Lateef, how are you? From a die-hard Chelsea fan. But he is also an analyst, and we are not expecting any biased reviews from him. He'll be, in fact, very, realistic. Emad Zafar Absolutely. hai hamare sath. Park Red se. How are you, Emad? Good, good. Thank you. एंड साद आर रेगुलर हमेशा मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से हमें ज्वाइन करते हैं. साद, हाउ आर यू? एंड आर न्यू फ्रेंड आदित्य. आई थिंक 2 हफ्ते पहले वी डिड अ शो. हाउ आर यू आदित्य? Yeah, I'm good, Samir. Thank you. आई थिंक देयर, yeah, I think the Hello. last show which we did, yeah, I think the last show which we did, that was the match was against Manchester United. So वो स्कोर बड़ा अच्छा एंड हुआ. आई थिंक आप लोगों को करना चाहिए रेगुलर ये. Yeah, of course, of course. I mean, I guess being associated with you guys is kind of lucky for us. So, yeah, of course. So even Europa is today. So we got some Yeah, important fixtures coming up. So yeah, please keep on inviting us. definitely, definitely. Acha guys, definitely we will discuss about all the issues and सारा कुछ करेंगे. But I want to start first with Tariq. I would want to know कि Tariq, ये जो ये लिवरपूल में जो हालात चेंज हुए हैं with वैन डाइक्स इंजरी, और अब ये ज्यादातर तो ये एक्सपेक्टेड है. आई थिंक नाउ इट्स ऑलमोस्ट कंफर्म कि इस सीजन तो ही इज नॉट कमिंग बैक. एंड ऑब्वियसली देन ही इज गोना कम बैक. वो किस तरह वापस आता है? एंड I mean, this is like now they have to, like, have to live without him. Think about replacement. So do you think अब title race पूरा change हो गया? See, it's not like that. I will say one thing. Firstly, we are very very sad about this fact because it's not about a particular team. It's about the game, and we really lost a very very good player. It's very sad to know that he won't be playing the entire season. We faced this situation in the past when City won back-to-back titles, and then the third year when it came, we had a huge number of injuries, and that's changed. Laporte going and Vincent Company going, Yeah, and backline completely getting disturbed and destroyed. So of course, this is all a part of the game, and it's not that just one player, but yes, it makes a lot of difference in terms of a character, which I understand that Van Dijk was one big character in the team. He was handling the entire team on the ground. Leader is lost, I can say like that. So even though if he's not captaining the side, especially in the defense, you need someone like Vincent Company or Van Dijk who controls the entire backline. And yes, like I said, that it's not about the race. I think this year EPL is not about one team. I personally feel it's about huge number of teams who are going to challenge each game with best of the best teams playing against each other. so but you don't think कि City के chances improve हो गए because I mean contend, I mean दो close तो दो Liverpool और City ही लग रहे थे. See, I feel that you have to win with your own capabilities and not with others, somebody going down. So, City has the capability of winning the title. It's not because Liverpool is going to play bad and City is going to win. They have Hmm. the potential. They have the potential to win before also and now also. So, I think it's not about Liverpool going weak, so City winning like that. Right, 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 right. अच्छा लतीफ, I have a question for you. मुझे ये बताएं कि ये जो
I mean, not because this happened with Liverpool and the most important player for Liverpool, लेकिन ये जो ऑफसाइड डिसीजन पे अगर horrendous टैकल हो तो उसको हम्म आप इग्नोर कर दें और सिर्फ ऑफसाइड फ्लैग को रेस करें, तो इस पे कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि मतलब आप फिर कुछ भी कर दो ऑफसाइड होने के बाद तो आपसे कोई सवाल हम्म ही नहीं होगा, बस आपको ऐसे थोड़ा अच्छा सा ड्रामा ये रखना है कि इंटेंट नहीं नजर आनी चाहिए टू गेट द अदर पर्सन इंजर्ड, और नजर आना चाहिए कि आप बॉल के लिए जा रहे हो। तो डू यू थिंक इट इज जस्टिफाइड इन एनी वे, या ये कि आप इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए इस रूल पे या एनीथिंग? नहीं नहीं समीर, इट्स नॉट एट ऑल जस्टिफाइड। फुटबॉल के अंदर तो हमने ये भी देखा है कि ऑफ द बॉल इंसिडेंट्स जो होते हैं, इफ दे आर एक्ट्स ऑफ वायलेंस या एग्रेशन, तो उसके ऊपर भी स्ट्रेट रेड कार्ड मिल जाता है। तो आई थिंक दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट व्हाट हैपेंड टू वैन डाइक। बट ये जो वार ने जो बहुत बड़ी जो ज्यादती की है ना लिवरपूल के साथ, इट वाज नॉट द फैक्ट कि वो ऑफसाइड दे दिया गया, इट वाज द करेक्ट डिसीजन। आई थिंक आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद द ऑफसाइड कॉल। ऑल आई हैव अ प्रॉब्लम इज कि वो जिस किस्म का टैकल था, इट वाज अ एब्सोल्यूट स्ट्रेट रेड, बिकॉज इट वाज डेंजरस प्ले, रेकलेस चैलेंज। तो वार ने क्या किया बेसिकली कि उस पूरे सिनेरियो को इग्नोर कर दिया। उन्होंने बोला कि भाई ऑफसाइड है तो उसके बाद कोई भी चीज काउंट नहीं होगी। लेकिन the guy who was in charge of war that night, he definitely erred in that moment. उसकी ये मिस्टेक थी, एक blatant मिस्टेक थी। और आई वाज रीडिंग अ फ्यू रिपोर्ट्स कि लास्ट सीजन भी उसने कुछ इस किस्म के ब्लंडर्स किए थे बीइंग इन चार्ज एट द वार टीम। सो it's not at all justified. It had to be a red card. If the referee missed it, तो वार को अलर्ट करना चाहिए था रेफरी का। अच्छा, एंड वन मोर पॉइंट, प्रीमियर लीग ने अगले दिन बयान दिया कि कोई रेट्रोस्पेक्टिव एक्शन नहीं होने वाला जॉर्डन पिकफोर्ड के अगेंस्ट, बिकॉज दैट प्ले was officiated, that moment was officiated on the field, so they cannot go back and give him some sort of punishment. वो अभी रूल्स का फॉलो किया प्रीमियर लीग ने, लेकिन जो सारी गलती थी वो वार वाले ऑफिशियल की थी। राइट। अच्छा, काशिफ, मुझे ये बताइए, ये जो हम लास्ट सीजन से खैर ये तो देख रहे हैं, एक चीज तो खैर थोड़ी सॉर्ट आउट हुई, वो जो हैंड बॉल वाला कि उन्होंने बता दिया भाई इतना हिस्सा आपका हाथ है, आई मीन हाथ नहीं है, वो बॉडी का हिस्सा है, ये हाथ में काउंट करेंगे। बट अदर देन दैट, जो ये मिलीमीटर्स और मतलब हाथ पे कोई मतलब बाल हैं वो ऑफसाइड हैं और सर के बाल ऑफसाइड हैं, तो ये मतलब व्हाट इज ये मिलीमीटर्स और इन पे व्हाट इज योर व्यू? आई मीन, I don't know. I actually don't remember कि has Arsenal suffered anything because of that. But a general view, what do you think about it? आई थिंक एक तो ऑन द आर्सेनल पॉइंट ये 2-3 दफ़ा हुआ है कि मिलीमीटर डिफरेंस के ऊपर कि जी आपका ओबामेयांग वाज अबाउट टू स्कोर और हैड स्कोर, जी उसकी एल्बो थोड़ी सी बाहर थी और एज यू सेड के बाजू का बाल थोड़ा सा बाहर था तो वो डिसअलाउ गया। तो बट आई डोंट थिंक देयर हैव बीन मोमेंटस इश्यूज अगेंस्ट फ्रॉम एन आर्सेनल पर्सपेक्टिव। बट ओवरऑल वही बात जो लतीफ़ भी कह रहे थे ऑन अ वार पर्सपेक्टिव कि वार इज़ अ गुड थिंग बट इट इज़ बीइंग यूज्ड इनकरेक्टली और इनकंसिस्टेंटली। आई थिंक मसला ये ओवरऑल आ रहा है। अब कहीं एक कॉमन सेंस भी अप्लाई होती है कि जब ये आपके गोल्स वगैरह आ रहे हैं और उसके ऊपर वो फिर वो लेज़र की तरह वो लाइन लगाते हैं स्क्रीन के ऊपर कि जी जज करने के लिए कि 1 मिलीमीटर ऑफ है। आई थिंक वो ज़रा इसको फाइन ट्यून करना पड़ेगा। आई थिंक सम गोल्स आर क्लियर कट और उसके ऊपर अगर एक हल्का सा बाल ऑफ साइड है, आई डोंट थिंक दैट should count at all. That should be given as a goal. That's my view firmly. Yes, obvious offside कि जी एक पैर foot is offside या एक clear body part is outside, then it makes sense. But इस तरह fine margins के ऊपर आप game ruin कर रहे हैं मेरे view के अंदर। VAR is a good thing in my view, but बिल्कुल ही बुरे तरीके से use हो रहा है। And in fact there are now more people against it rather than for it. जैसे पिकफोर्ड का भी इशू हुआ है, गोल्स के मसले Yeah. हो रहे हैं, ऑफ साइड की इतनी रिडिकुलस चीजें आ रही हैं। अच्छा समीर, मैं एक चीज यहाँ पे ऐड कर दूं, सॉरी। इस सीजन शुरू होने से पहले आईफैब के अंदर ये चीज डिबेट हुई थी कि वार की जो लाइन है उसकी जो थिकनेस है, इट इज वेरी थिन राइट नाउ, सो देयर वाज दिस कॉल टू इंक्रीज द विड्थ ऑफ द लाइन, ताकि जो मिलीमीटर वाले जो फैसले हैं ये इस किस्म की कंट्रोवर्सीज ना हो। बट दिस वाज ओवर रूल्ड बाय द गवर्निंग बॉडी आईफैब, जो रूल्स बनाती है फुटबॉल की। सो दे डिडंट रियली हैपन, बट ये इसको अंडर कंसिडरेशन जरूर लाया गया था। Right. अच्छा, इमाद, आई हैव दिस क्वेश्चन फॉर यू आल्सो। यार हम लोग पहले इतने टाइम से हम सब फुटबॉल देख रहे हैं,
तो पहले भी ये होता था कि कभी ऑफसाइड डिसीजन ठीक होते थे, कभी गलत होते थे, बड़ा नॉर्मल और कॉमन था ये। तो जब वो रिप्ले आता था तो बिना लाइंस ड्रॉ करे जो कमेंटेटर्स होते थे, जो कमेंट्री कर रहे होते थे, वो अपना व्यू तो देते थे कि भाई ये द रेफरी हैज कॉल्ड इट राइटली एंड द रेफरी हैज मेड अ बिग मिस्टेक। उस वक्त ना कोई लाइंस ड्रॉ होती थी, तो वो बड़ा इजीली बता देते थे। अब ये हमने इसको एक मतलब ओपन हार्ट सर्जरी बना दिया है। मतलब क्या हमने वो मतलब व्हाट आर वी गेटिंग इनटू, ये स्पॉइलिंग द एसेंस ऑफ द गेम। ये सब लोग पहले बोलते थे ना, और हम लोग सब अग्री करते थे 90% जब तक अपनी टीम ना हारे कि हाँ भाई ये ऑफसाइड था या ये ऑफसाइड नहीं था। तो मतलब क्या बोलते हैं, ये क्या ये लोग एक एक लाइन, मतलब पहले भी तो कॉल्स ली जाती थी ना। दे वर आल्सो हाईली पेड रेफरीज, और वो सारे कमेंटेटर्स वर लाइक प्लेयर्स ओनली, एक्स प्लेयर्स। तो ये किस चीज में ये लोग पड़ गए, व्हाट आर दे गेटिंग इनटू? I think talking about VAR, this is probably the worst time to ask a Liverpool fan for opinion on VAR. अग्रीड, अग्रीड। But yeah, generally speaking, I'm sure a lot of people agree with this. I'm not against the idea of using VAR. I think it's a fantastic invention in the game. There's no doubt about that. उसकी जो application और usage है, it is just completely screwed up. It's been misused, misinterpreted. मेरे हिसाब से the common sense, the very जो common sense इस्तेमाल करने वाली चीज वार में ये होनी चाहिए कि if there is a decision that's dicey, if there's a decision you're not sure about, just have the ref take a look at it. Just keep it simple. मुझे ये lines and all that nonsense, I mean, why do you, like you just said, पहले भी तो हम नॉर्मल रिप्ले देख के फैसला कर लेते थे और उससे खुश हो जाते थे कि भैया ऑफसाइड है या नहीं है. Now the ref will have another chance of reviewing a certain decision. He can have a look at it the second time and then make a decision. I don't understand कि हमने इसको इतना या unnecessarily complicate क्यों कर. A lot of these decisions जब गलत भी होते थे तो हम even as people who are not supposed experts, हम भी स्क्रीन पे देख के बता सकते हैं कि भाई ये सही है या नहीं है. I just think this is the simple formula they should be following. If there's a decision that's dicey, the ref goes to the monitor, takes a look, whether it's an offside decision or whatever decision it is, and then he makes a decision with the screen in front of him with 10,000 replays. I mean, till he's satisfied, and makes the correct decision. I mean, they've just complicated this entire process, and it's just no surprise कि वो इतना बड़ा mess up हो गया. And I'm not just talking about this weekend. We've seen this for about a couple of years now. कि उसकी application के मसले अभी तक चल रहे हैं, and I mean, it's baffling how they're complicating it further rather than making it more efficient. राइट। आदित्य, अब आई मीन अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन भी करें, व्हेन लाइक आई मीन हम सब बिकॉज ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ दिस रीजन, द साउथ ईस्ट एशियन रीजन, सबका क्रिकेट से ऑब्वियसली एसोसिएशन है काफी। तो क्रिकेट में तो जब टेक्नोलॉजी आई थी तो मतलब पीपल वर वेरी हैप्पी। और क्रिकेट में आई थिंक टेक्नोलॉजी ने, आई थिंक वो कुछ छोटी निटिग्रिटीज को हम छोड़ दें, वो एम्पायर्स कॉल वगैरह, तो अदरवाइज टेक्नोलॉजी हैज रियली हेल्प। रन आउट से शुरू हुआ था, नाउ इट कवर्स एवरीथिंग एंड इट हैज हेल्प द गेम। और क्रिकेट में देखा जाए तो क्रिकेट के बजट्स एंड क्रिकेट के, आई मीन क्रिकेट की हर चीज बहुत छोटी है रिलेटिवली वर्ल्ड वाइड। अगर हम कहें, हम इंडिया के पाकिस्तान के साइज से तो नहीं कंपेयर कर सकते क्रिकेट की पॉपुलैरिटी, बट वर्ल्ड ओवर तो फुटबॉल इज एवरीथिंग। मतलब उसमें उन्होंने एक एक गेम को का मजाक बना दिया है। मतलब एक वीडियो टेक्नोलॉजी नहीं हैंडल हो रही, मतलब इतना पता नहीं क्या मुश्किल हो गया है। तो मतलब डू यू थिंक व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज इससे I mean the type of people, I mean I am not part of that, but the type of people who always want to talk about those controversies or those conspiracy theories. In fact, I was about to say कि यार मैनिपुलेट करने में ये चीजें बड़ी हेल्प करती हैं जब आप टेक्नोलॉजी को डूबियस रखते हैं। तो मतलब दिस इज नॉट गिविंग अ गुड नेम टू द गेम। Yeah, it's a good point actually. The comparison between cricket and football and the technologies used. क्योंकि जब भी हॉकाई था, जब भी DRS था इसमें, and it is so damn effective. वो टेक्नोलॉजी जब भी हम लोग कोई देखते हैं उसे, and even we can like say कि ये out था या फिर ये not out था. But in terms राइट, of VAR, uh, the thing is that it is also about the sport. So cricket or football today, what different games है. Football is very fast paced.
while cricket is something which can be interrupted, which can be just said that कि मतलब पहले भी वहाँ पे थर्ड अंपायर सब ऐसा होता था, so there is a scope for like stopping the game. But when you stop football, so it's a very different thing. So we are like taking away the pace of the game. We are taking away the momentum which is like guiding the players. So it's a different ball game. Although the other kind of comparison is good, that कि टेक्नोलॉजी की द पीपल फ्रॉम क्रिकेट दे हैव लाइक फाउंड कि ये सिस्टम यूज कर सकते हैं, ये टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर सकते हैं, and it is actually working. It is showing them some good results. Uh, but then again, I mean, in terms of like the technology VAR, although it seems good, the implementation has not been great. It's maybe because of the nature of the game football. कि फुटबॉल बहुत ही फास्ट पेस है, हम लोग को जब भी फुटबॉल देखते हैं वी आर लाइक सो ग्रिप्ड, हम लोग को रुकने की आदत नहीं है, हम लोग को बस चाहिए कि तुम लोग बस खेलो। ज्यादा कुछ ऐसा थ्रो के हुआ तो देन वी कैन हैव लाइक पिक आवरसेल्व्स अप कि यार अभी 2 सेकंड हम लोग रेस्ट ले सकते हैं। एंड व्हेन वी स्टॉप अ गेम लाइक दैट फॉर like a minute or two for a VR decision, it is just so negative. It is not really in the spirit of the game, to be honest. But I get it that the implementation has not been great. There could be a better way, कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी हो सकती है, like the point you made that फुटबॉल अभी बहुत बड़ा स्पोर्ट है, इसमें रेवेन्यू श्योरली ज्यादा है क्रिकेट से, एंड पूरे वर्ल्ड का अटेंशन अभी फुटबॉल नहीं पे बट है। देखें बट भाई, आदित्य देखें, आई थिंक बेहतर बेहतर तो हो सकती है। या ऑफ कोर्स मतलब बेहतर हो सकती या है, या आई फिर मीन देखें, इसमें तो आप ये देखो ना कि आई मीन द अमाउंट ऑफ मनी दे हैव, एंड नाउ द टेक्नोलॉजी एट द हैंड्स ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड। आप ये देखो कि आई मीन इफ दे वांट, दे कैन इंस्टॉल सेंसर्स, दे कैन डू सो मच कि इन द रनिंग गेम आल्सो, जहां पे वो इंसिडेंट हो, आई मीन आई थिंक दे कैन, जो जो वीडियो रेफरीज है वो कॉन्स्टेंटली गेम देखें। दे डोंट हैव टू एक्ट लाइक दोस थर्ड एम्पायर्स के जिनको रेफर किया जाएगा। they can be in the game and they can have all the technology on the field, and जैसी गेम रुके, आई थिंक इन a few seconds they can call कि यार ये डिसीजन ये था या नहीं था। I think if they really want to do it with really the technology we have, with the artificial intelligence we have, I think eventually ये doable है, but अगर ये लोग करना चाहें। लतीफ, what do you think, कि क्या नहीं हो सकेगा इस तरह भी, मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है? Yes, Sameer, honestly, I do not सो have any issues with the offside rule, because देखो, it's the rule is the same for everyone. तो मतलब हम लोग यहाँ पे बैठ के उसको डिबेट कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, मिलीमीटर्स हो या चाहे इंच हो, जो भी, तो इट्स द सेम फॉर एवरीवन। मतलब इट्स जस्ट ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें ये नहीं हो सकता कि यार एक टीम के साथ नाजायज हुआ, दूसरे के साथ जायज हुआ, इट्स द सेम फॉर एवरीवन। सो I think I'm pretty much fine with the offside rule, because it's black and white. There is no gray area on it. वो तो कंप्यूटर बता रहे हैं ना, ह्यूमन इंटरप्रिटेशन तो है ही नहीं उसके अंदर. इट इज द मशीन which is telling you if it's a millimeter or an inch or whatever it is. So I don't see the point of a debate for the offside rule, honestly speaking. ये या ये आई मीन ये पहले भी कभी जब भी भी होता जो है था ना, ये तो ये कभी भी ये इंसान हमसे अग्री नहीं करता। मैं इनसे बहुत अरसे से बहस कर रहा हूँ, लेकिन ये इनका रूल फिक्स है। जी आदित्य, यू आर मुझे सेइंग समथिंग। याद है हाँ कि सर। जी। कंप्यूटर कंप्यूटर ने लिवरपूल के विनर वाला ऑफसाइड पकड़ लिया, but the Van Dijk which you could clearly see with the naked eye on the replays, मुझे वो समझाते कि how does that happen with the computer technology. See, I would say that VAR is something which was brought into the game with a good intention, but technology is used for good, but it is the worst technology which is being used at this point of time, to be very frank. And as a City fan, I think it has been a disaster for us. So for us, it is being very bad. And like I said, at times, even when the technology is showing something, okay, the decision is given against. I mean, why are you using VAR? Like earlier, there was no VAR. Things were all nice, all smooth. Laga, if in case the offside
decision is in your favor, you're lucky. If it is not in your favor, it's okay. The game goes on. Now what has happened? I feel that VAR should have been used for some kind of foul play. जो कुछ भी foul play होता है, there are many players who are pulling down pants and pulling down shirts in the D, pushing people. All this is good. You should. But for offside, वो गट फील पे या तो बहुत मार्जिन है तो पता चलता है क्या वो जो दैट माइन्यूट है वो इट लेट इट गो विद द गेम लेट इट गो विद द फ्लो एवरीबॉडी इट्स लाइक फॉर द बोथ द टीम्स इफ सम डे इट वर्क्स फॉर यू सम डे इट डजंट बट यहाँ पे तो टेक्नोलॉजी को इतना बुरी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है इट इज डिस्ट्रक्टिव आई मीन फ्रैंकली स्पीकिंग अब जैसे लाइक वेंडाइक का देखते हुए भी उसको इग्नोर कर रहे हैं हाउ Acha, I have another point to add here. I want to go back to the Van Dijk incident. I don't know how many of you all agree, but I think जो receiving end पे जो player होता है, his reaction really is, in my opinion, the game changer. Because I remember जब in first action, in normal action when this happened, Acha, even I didn't think it was that bad, honestly. So do you think the reaction of the player on who's at the receiving end of a foul plays a major impact? I don't know if Van Dijk rolled over like crazy and cried and maybe the decision भाई would be, if you want a decision you have to do a Neymar. आप नेमार वाली एक्टिंग करो, आपके सामने कार्ड आपको दिल में लगे. Yeah, because I remember जब वो फाउल हुआ था and I clearly remember उसमें Van Dijk का बहुत normal सा reaction था. But on the replay, I mean, you could see it was a terrible tackle. So did that have a role in this decision not going in his favor immediately? I don't know, because offside भी तो वो बाद में आया होगा ना replay पे. I don't know. Maybe if it was Salah, he would have made the most out of it. So maybe that had a role to play also. There are teams who are getting penalties on this just for their acting. Yeah, come on. This is वो जो पेनल्टी वाली हमारी टीम है, पेनल्टी वाली नहीं, वो पेनल्टी वाली जो हमारी टीम है वो साद का कुछ, हमने मैनचेस्टर यूनाइटेड को बुलाया था, उनके बगैर शो कंप्लीट नहीं होता, उनका इंटरनेट का कुछ इशू हो गया, वरना वो आना था उन्होंने ब्रूनो फर्नांडिस की पेनल्टी पे बात लेकिन इस बात पे लेकिन इमाद का पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगर रिएक्शन वाला केस है देन इट एड्स टू द लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स विद वार एज वेल. मतलब कि अगर अब वैन डाइक, नोइंग वैन डाइक बिग टफ गाय एंड ऑब्वियसली अगर आपकी इस तरह की इंजरी हो, देयर आर सम रिएक्शन जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते. मतलब कि एज अ आर्सेनल पर्सपेक्टिव अगर मशहूर हमारी वो रैमजी की इंजरी आप लोगों को याद होगी, एडुआर्डो की इंजरीज याद होंगी, देयर यू कांट हेल्प बट अवॉइड. सही है, बट इस केस के अंदर अब अगर जी चले अगर वो वैन डाइक को अगर वो पिकफोर्ड को रेड कार्ड अगर इस वजह से मिलता कि वैन डाइक ने 3 रोल एक्स्ट्रा ले लिए और फिर ये वार की एक और लिस्ट लगा दें, जो एक और पॉइंट लगा दें जो मसला हो रहा है वार के साथ कि डज इट रिक्वायर. बट आई फुली अग्री, कोई मशहूर प्लेयर होता नेमार टाइप की, हल्की सी आप उसको टांग मारें, वो 5 रोल मारता और फिर जी वो डिफेंडर को रेड कार्ड मिल जाए विद और विदाउट वार, सही ना, देन इट डजंट हेल्प द रूल्स. मैं उसकी बात भी सोचा था लतीफ़, सॉरी, आपकी जो ऑफसाइड वाली भी बात है, आई अग्री के कंसिस्टेंसी इज देयर, वो जो जी कोनी बाहर है दैट विल अप्लाई टू एवरीवन. बट बैक टू आई थिंक जो तारिक बात कर रहे थे कि जो स्पिरिट ऑफ द गेम वाली बात है कि एक प्लेयर मोशन होता है कि जी अब एक बंदा, एक अटैकर बॉल लेने भागने की एक स्प्रिंट निकाले और उसका एक मुक्का एक फिस्ट आगे है जी लाइन से, लाइक वुड यू क्लासिफाई दैट एज एन ऑफसाइड इवन दो बॉल इज नहीं. आई नो व्हाट यू ट्राइंग टू से, बट जस्ट सेइंग कि थोड़ी सी ये जो रूल्स फाइनलाइज करने की रूम आई थिंक और है. आई एग्री कंसिस्टेंसी इज देयर बट प्रॉब्ली फाइन ट्यूनिंग की सख्त जरूरत है ऑफसाइड रूल के ऊपर भी. अच्छा, वो वैन डाइक वाला जो ऑफसाइड था ना, वो उसके हाथ की वजह से नहीं दिया गया था. इट वाज गिवन जस्ट बिकॉज ऑफ हिज शोल्डर या आर्म पिट आप कह लें, बिकॉज मैं वैसे एग्जांपल दे रहा था. हाँ, ओके या यार, लेकिन मैं बताऊं, देखें वार पे तो हम लोग कुछ देखें ना, जितना द मोर वी आर डिस्कसिंग इश्यूज बढ़ ही रहे. अब एक ये भी चीज एस्टैब्लिश हो गई है कि भाई हर फुटबॉलर अपने स्कूल में, कॉलेज में एक्टिंग लेसन्स मैंडेटरी अपना एक साइड में कोर्स रखे, क्योंकि वो हमेशा उसको हेल्प करेगा थोड़ा उससे डिसीजंस लेने में, वो भी अब करना पड़ेगा. बट आई थिंक वार का तो हाँ
ये चीज लेकिन होती पता है है मैं समीर। ये हाँ, साउथ अमेरिका की फुटबॉल एकेडमीज में ये प्ले एक्टिंग की जो ना बाकायदा ट्रेनिंग होती है। एंड I won't be surprised because South Americans, from what I've seen, they are experts at drawing fouls and play acting and हाँ, वो everything. फॉरेस्ट जो है वो दांत काट के वो दांत पकड़ लेता है, क्या दांत में इतना दर्द हुआ कि उसको काटा मैंने, मतलब वो उसको भी अपनी तरफ ले लेता है, तो मतलब या दे कैन रियली रियली नो हाउ टू डू इट। बट पता है अब बाहर से थोड़ा सा हट के हम टीम्स का जो ये एक ऑब्वियसली है तो छोटा स्टिंट 5 मैचेस का, बट आई थिंक के 5 5 मैचेस को हम लेके चलें तो वी कैन सी के क्या नजर आ रहा है। तो अब काशिफ, आप you tell me how are you seeing Arsenal in these 5 games? मतलब do you see as per the expectations, or you see के हाँ मतलब इस पे चलते रहे तो जो टारगेट है मतलब टॉप 4 है वो अचीव हो जाएगा, वो what do you see, और क्या लैगिंग क्या देखते हो? आई थिंक पहली बात तो ये कि अभी जो 5 मैचेस हुए हैं उसमें से आर्सेनल की 2 गेम्स, एक लिवरपूल एक सिटी हो हाँ, चुकी हैं। और ट्रू। दोनों का पैटर्न अगर आप गेम्स का देखें, वो आई थिंक ऑलमोस्ट सिमिलर था कि एक वो 2-3 साल पहले की अगर ये बात होती, हमने इसके ऊपर वो प्रीव्यू शो भी किया था कि एक एक्सपेक्टेशन से कि जी आर्सेनल तो जी 4-0 आज हारेगा, जी आज तो 5-0 हारेगा एनफील्ड या इत्तेहाद स्टेडियम के ऊपर एक्सेट्रा। या तो वो स्टेबिलिटी और आई थिंक जो थोड़ी सी सॉलिडनेस जो है ना वो आ गई है। जो सिटी का जो मैच भी था रीसेंट वाला, उसमें इनिशियली तो मैंने कहा कि यार ये तो डजंट लुक लाइक अ स्टेप फॉरवर्ड, बट व्हेन आई रेड बैक ऑन द स्टैट्स, द रिपोर्ट एक्सेट्रा, द वे वी वर सेट अप, आई वाज ओके विद द ओवरऑल थिंग कि नहीं यार इतना बुरा नहीं मसला गया ये वाला। सही है। मेरी ये व्यू है कि टॉप 4 डेफिनेटली हो सकता है आर्सेनल का। एक प्रॉब्लम, 2 प्रॉब्लम्स थी। डिफेंस, वो आई थिंक गेब्रियल की अगर आप लोगों ने परफॉर्मेंसेस देखी हो, ही इज डन क्वाइट वेल इन माय व्यू, और उसको एक सिटी की गेम में भी उसको फेंका गया एंड ही प्रूव्ड हिमसेल्फ इन दैट। नंबर 2, मिडफील्ड का जो मसला आ रहा था वो अब आगे देखते हैं कि अब पार्टी आया है स्क्वाड के अंदर, तो दैट जो सॉलिडनेस चाहिए थी मिडफील्ड के अंदर वो अब पता चलेगी जब उसको लेस्टर के अगेंस्ट खिलाएंगे, एंड दैट विल डिफाइन the way forward, and it will hopefully bring Arsenal back to a back four defensive position as well. I think ये अच्छी signings हुई हैं. Arsenal had a good transfer window as well, so I would be horrified अगर top 4 आर्सेनल इसके बावजूद ना पहुंचा। आर्टेटा की एक आपको स्ट्रैटेजी एक वो नज़र भी आ रही है कि he's a thinker, so hopefully we can do well and be in the top 4 for sure. राइट। अच्छा, आदित्य, टॉटनहम पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आई मीन आई वुड टेक योर व्यू आल्सो, एंड आई वुड आल्सो वांट यू टू टेल मी कि ये जो लास्ट मैच हुआ जिसमें आई थिंक 3-3-1 से इट वाज 3-3 या 3-0 से, मैं Three आई nil हैव से, लिटिल 3-0, 3-0 से। या 3-0 से। ये बड़ा 3-0 ये जो चीज hurts है to ना, say, but yeah, 3-0. या बट ये बेसिकली स्पेशली मोरिनियो के लिए ना, आई मीन देखें ये चीजें सबने फेस की है, मतलब जो मैचेस मुझे याद है, लिवरपूल वर्सेस बोर्नमथ था, आई थिंक 3-1 या 4-1 जीत रहे थे, एंड एंड में शायद 4-3 हारे थे। तो Yeah. ये मतलब मोरिनियो के केस में ना एक बार जब लीड आ जाती है तो मतलब फिर तो वो फोर्ट्रेस बन जाता है, मतलब देन यू डोंट एंटर दैट कम बैक की खत्म हो जाता है। तो what happened in that match also, and it is like it was a mistake from players, या कुछ मोरिनियो अब बदल गए, कुछ चेंज हो गई चीजें? Yeah, so there were a lot of factors what I can like think of. So the first thing is that West Ham एक ऐसी टीम है जो टॉटनहम के साथ एक ऐसा कप फाइनल की तरह खेलती है. So for हाँ, them टॉटनहम लंदन is like डर्बी। everything. I mean हम लोग को एटलीस्ट ये मैच तो जीतना है ही. So हम्म। they have that kind of an attitude every time they play us. So also एक ऐसी टीम होती है ना, I mean no matter how good you are, there is always that one team जिसके अगेंस्ट आप थोड़े स्ट्रगल करते हो. तो वो ऐसा वो हमारे लिए वेस्ट हैम है. सो एवरी टाइम द गेम बिटवीन वेस्ट हैम एंड स्पर्स इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस. सो द गेम वाज रियली क्रेजी बिकॉज एक ऐसा गेम था जहाँ पे इन 16 मिनट्स यू आर लाइक लीडिंग 3-0. हैरी केन एंड सॉन आर इन एन एक्सेप्शनल फॉर्म. यू आर लाइक वंडरिंग कि अभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता है.
everything. We are dominating the midfield. We are good at the back. We are controlling the game. So everything is good. Yeah. Then the 70th minute comes in. Even Jose Mourinho, someone like him, उसने कभी सोचा नहीं था कि अभी ऐसे टाइम पे जहाँ पे हम लोग इतना डोमिनेट कर रहे हैं, ऐसे गेम में ये लीड हम लोग गिव अप करने वाले हैं, ये लीड हम लोग पूरा ब्लो अवे करने वाले हैं. आई डोंट थिंक मोरिनियो एक्सपेक्टेड इट. तो मोरिनियो ने क्या किया कि ही ब्रॉट इन गैरेथ बेल, he brought in Harry Winks. He replaced our good player Tanguy Ndombele, who was like our key part in the midfield. Hmm. So when that happened, even then he got in Lucas Moura. So जो भी substitutions थे, they were all attacking. So I don't think Jose ever thought about this that ऐसा कभी हो सकता है उसके टीम के साथ. So maybe he got into that kind of a mentality that यहाँ से कुछ mess up नहीं होगा. So all the substitutions which should have been defensive as per the old Mourinho, they turned out to be offensive substitutions. And we were like, we just gave it away. एक गोल वो लोग ने मारा set pieces पे, that happened. Next one was an own goal, and the third one was a worldie. So वो कोई किसी ने सोचा नहीं था कि लंजीनी ऐसा कर्लर मारेगा, वो भी 94th मिनट में. So it was something else. So I don't think it's something to worry about with the nature of the goals that we considered. But Yeah. maybe, just maybe, I mean, the club should be, the player should be more prepared to deal with these kind of situations. So Gareth Bale could have finished that game with a goal, but he missed it when he was one on one with the keeper. Maybe even he needs some time to get back to his old shape. Like वो जो उनका पहले वाला जो मोजो था, I mean, he still need some time to be that good. There was some good elements to his game as well. Maybe as well, we were a bit anxious when Gareth Bale came on. Maybe there was some kind of nervousness surrounding the players or something. कि भाई, I mean, तो जो structure था टॉटनम का टीम का, that suddenly got disturbed. So maybe that might be the reason. But all in all, it was a great game if we see it. But except for the last 15 minutes, but yeah, I mean, you can't help but wonder that how can you lose a lead like this? और वो भी Jose Mourinho की team. But I believe that Jose Mourinho is someone who is very much experienced, and he should be able to deal with something like this. No, right, and I think yeah, all over things are looking much improved for Tottenham. But लतीफ, मुझे ये बताएं कि लैम्पार्ड को जो है वो लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट मुझे लगता है दे देना चाहिए विद चेल्सी. मैं जैसे सोच रहा हूँ कि ऐसी कोई चीज हो जानी चाहिए. आपका क्या ख्याल है इस पे? बिल्कुल सही कह रहे हैं समीर. ये एज अ होस्ट आप ये सवाल पूछ रहे हैं या एज अ लिवरपूल फैन पूछ रहे हैं? पहले आप ये बता दें. नहीं, मैं तो देखे जब मैं शो में आता हूँ तो मैं तो आपको पता है मैं भूल जाता हूँ. मैं सारे क्लब्स जो है मेरे लिए मतलब बराबर हो जाते हैं. अच्छा. लेकिन मैं नहीं तो समीर. मेरा ये हाँ. सवाल की वजह पता है हम्म. क्या आ रही है कि ये जो हम्म. मैं एक एक बंदे को मतलब इतना पैसा देके इतनी अच्छी टीम बनाई है, मतलब रियली अ टीम टू, आई मीन यू एज अ न्यूट्रल ऑल्सो आपको मजा है कि यार ये टीम है, इसको खेलते हुए देखें. यस. यस. उसमें जबरदस्ती मेसन माउंट जो है वो विंग पे खेलते हुए मुझे रेगुलरली, एक तो होता है ना भाई मैसिव इंजरीज हो तो एलेक्स फर्गुसन तो सीडीएम को स्ट्राइकर भी खिलाते थे, वो अलग बात हम्म. है. लेकिन यहाँ पे जबरदस्ती दो विंगर बेंच पे बैठे हैं, मेसन माउंट मिड राइट साइड पे विंग पे नजर आ रहा है. तो हम्म. मतलब एंड चेल्सी हैज, मतलब एवरीबडी इज लुकिंग टुवर्ड्स चेल्सी बिकॉज ऑफ द साइनिंग. तो हम्म. अब हम्म. सारी सब कुछ बदल गया है लास्ट सीजन से. तो कैन यू प्लीज टेल मी कि ये क्या हो रहा है और लैम्पार्ड क्या करना चाह रहे हैं, इसमें है क्या ये? यार देखें, टू बिगिन विद लैम्पार्ड इज फुटबॉल मैनेजर्स के अंदर द बिगेस्ट मिस्टर यू टर्न. मतलब वो जैसे सिर्फ ये हमारे पाकिस्तान के अंदर ही पॉलिटिशियंस यू टर्न नहीं लेते, फुटबॉल के अंदर मैनेजर्स में फ्रैंक लैम्पार्ड का नाम टॉप पर आता है. एक छोटा सा एग्जांपल, लास्ट सीजन ओलिवियर जिरू को पूरा सीजन साइडलाइन किया गया और कहा कि इट्स नॉट रिक्वायर्ड दिस एंड दैट. After February onwards, he was the most important player for Chelsea because he got the goals and he ensured a top four finish. Abhi
एंटोनियो रूडिगर के साथ ये सेम चीज कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको जब से सीजन Hmm. शुरू हुआ ही हैजंट गॉट अ लुक इन एट ऑल. आई विल Yeah. नॉट बी सरप्राइज आफ्टर अ फ्यू गेम्स हम देखेंगे एंड एंटोनियो रूडिगर दोबारा टीम के अंदर शामिल हो जाते हैं एंड ही बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंडर अलोंग विद थियागो सिल्वा. सो लैम्पार्ड इज डूइंग ऑल ही इज डूइंग इज ट्रायल एंड एरर. मतलब ये ट्रायल एंड एरर वाली जो चीजें होती है ना, ये यू डोंट डू इट एट द टॉप ऑफ द ट्री, एट द टॉप एंड Yeah. क्लब लाइक चेल्सी. You start from the bottom, you learn your trade, and then you come up in a gradual progression. अच्छा, अब मुझसे समीर, जब भी हम लोगों ने इस किस्म का कोई शो किया है, आई ऑलवेज कम अप विद दिस थ्योरी कि भाई ये पेप गार्डियोला और जिडान ने एक दे वर एक्सेप्शंस टू द रूल, दे वर आउटलायर्स, दैट इज नॉट हाउ द फुटबॉल स्ट्रक्चर वर्क्स. इस किस्म की सक्सेसेस बहुत कम होती हैं, इक्की दुक्की, लेकिन ऐसे फेलियर सैकड़ों मिलेंगे आपको who where ex-players have been promoted to the position of a manager and they have failed miserably. ज़्यादा दूर नहीं, Gennaro Gattuso को आप ले लें, when he was at Milan में तो खैर Seedorf also failed, Gattuso, Inzaghi was also given a chance at Exactly. Milan. तो इस किस्म की मैं लिस्ट गिनवाने बैठूं तो बहुत लंबी लिस्ट है. तो अगेन दिस, अच्छा लैम्पार्ड को लास्ट सीजन की क्रेडिट दिया जाता है कि यार ही ब्लडेड यंगस्टर्स, ही गेव यंगस्टर्स अ चांस, कितना जबरदस्त एकेडमी प्लेयर्स को यूज किया. ओ यार, टेल मी वन थिंग, डिड ही हैव अ चॉइस? If he didn't play Mason Mount, if Yeah, he he didn't did. play Kurt Zuma, what would he have done? Any Just manager took it would have out. given youngsters chance. Exactly. तो लैम्पार्ड ने कोई अपनी टैक्टिक्स या अपनी स्ट्रेटजी से टॉप फोर फिनिश नहीं लेकर आया था. Although Chelsea fans will not agree with me, I understand that I will face a lot of criticism from them because Lampard is a beloved darling of all die-hard Chelsea fans. But objectively, अगर मैं सिचुएशन को देखूं, Lampard lacks a lot as far as tactics and strategy is concerned. मेसन माउंट को, अच्छा ये चेल्सी सर्कल्स के अंदर जो ना, ही इज बीइंग कॉल्ड एज द इलेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ फ्रैंक लैम्पार्ड, बिकॉज नो मैटर व्हाट हैपेंस, कम कुछ भी हो जाए, मेसन माउंट नहीं ड्रॉप होगा, ठीक है ना, ये बात तो तय है. लास्ट सीजन ही प्लेड द मोस्ट नंबर ऑफ मिनट्स फॉर चेल्सी, ये उनका रिकॉर्ड भी था. तो इफ ही इज ब्रीदिंग, इफ ही इज मतलब फिट तो दूर की बात है, बस वो सांस ले रहा है, तो मेसन माउंट मुझे लगता है कि वो तो लैम्पार्ड खिलाएगा ही. He still doesn't know his best playing 11. He is still tinkering with the defense, although मुझे लग रहा है कि Zuma and for the time being Zuma and Thiago Silva center के अंदर खेलेंगे थोड़ा टाइम, बट Yeah. एक कुछ और मिस्टेक्स कर्ट जुमा की तरफ से आई, आप देख लीजिएगा कि एंटोनियो रूडिगर दोबारा हमारे बेस्ट प्लेयर बन जाएंगे. डिफेंस फिर भी थोड़ा बहुत मुझे सेटल लग रहा है स्लोली, but he still does not know. अच्छा, मार्टियो कोवाचिच was Chelsea's player of the year last season, ठीक है. इस सीजन हमें अभी पिछले कुछ मैचेस में नजर आ रहा है कांटे एंड जॉर्जिनियो द प्रेफर्ड मिडफील्ड टू. And आगे when you have a player like Callum Hudson-Odoi or Hakeem Ziyech who's a proper winger, you play Mason Mount. Number 10 पे Havertz का जो रोल है, I think that is fine, that is something good. पुलिसिच की अगर आप बात करें, he's just coming at the back of an injury. He hasn't had a proper preseason. He needs to be bedded in gradually. मतलब पूरे पूरे 90 मिनट्स खिला रहे हैं, and obviously he's not producing because he's not match fit as yet. तो ये एक मैनेजर में अवेयरनेस होनी चाहिए कि यार इसको कुछ मैच में आधा घंटा खिलाया, फिर आप एक हाफ खिलाया, मतलब इस तरीके से आप बेड इन करते हो ना प्लेयर्स को. Right. तो सही बात है. Lampard has a lot to learn. मतलब I could go on and on about Lampard, but मैं सिर्फ ये शो में चेल्सी के बारे में नहीं बताना चाहता. Let's move on to other topics and give others the chance to speak as well. राइट. अच्छा तारिक, ये क्या बोलते हैं, एग्वेरो फिट हो गए दोबारा, ये एक अच्छी चीज हो गई. आई मीन एग्वेरो का फिट होना ऑब्वियसली गिव्स अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी टू द टीम, एंड विद रूबन डियास कमिंग इन. सो हाउ आर यू सीइंग जो थोड़ी जो लैकिंग टीम में देखी गई शुरू के 4 मैचेस में? आई थिंक सिटी हैज प्लेड 4 एंड नॉट 5. So, I mean, do you think कि वो जो थोड़ी जो weaknesses हैं, they will be able to overcome? How are you seeing that? Yeah, like I said, see, last year what we faced the problem was our defense, and this year Yeah, we really picked up some really good Ake and Diaz both coming in the picture. So I think our backline is in clear picture now, and especially uh, left back or right back we settle heavy. So I don't think so we have any problems in midfield. I mean, we never had problems in midfield, but defense was a very big issue for us last year, which I feel this year we have overcome that. And of course, if Aguero is fit, then God bless the other team, I can say. So we are in line. Yes, of course,
we lack a backup for Aguero at this point of time because Gabriel has not been that consistent for us comparatively to Aguero. And if in case in the coming window, if we have someone backup for Aguero, then I don't think so. We need anybody in the team. We Right. have all the arsenal to capture. बिल्कुल सही बात है. तो अच्छा यार इमाद देखें, अब ये बाकी तो डिस्कशंस हो गए यार, अब मुझे थोड़ा बताओ यार ये क्या होगा यार, लीग जीतेंगे नहीं जीतेंगे, अब सब देख रहे हैं इस तरह. अच्छा, ये talking specifically Van Dijk, इसमें तो you can't stress enough how monumental this loss is. इसमें तो देखें his ability as a defender तो वो तो एक चीज है, but I think Tariq probably touched upon this when he was speaking earlier. His ability to organize defenses and make plays around him better. Yes. That is what we miss Yes, most. So you could probably बिल्कुल. spend 40-50 million in the January transfer. 2 महीने ही बाकी है, ज़्यादा time ही नहीं है. You could हाँ, spend on a lot of players in the January transfer window. Liverpool right now is a very attractive proposition for anyone. आप शायद वो player ले भी आए. But the one राइट. thing that cannot replace is how he makes players around him good. पता है, लीडरशिप जो है उसकी. Joe Gomez, for example, yes, ठीक है, last 3-4 महीने last season के he was a bit shaky, but या otherwise last year and a half before that he was phenomenal. I mean, we were talking about Joe Gomez is perhaps one of England's best defenders. उसके या अलावा there's Matip. When Matip plays with Van Dijk, he's a different player altogether. We've seen this. This is what Van Dijk लॉवरेन brings. लॉवरेन कितना अलग लगता था जब वो वैन डाइक के साथ खेलता था. It's just different players around him. That's what we have lost with Van Dijk. अच्छा, एक और चीज जो इतनी ज्यादा शायद बात नहीं हो रही, but I think is again a big loss for Liverpool is that Van Dijk की direct replacement right now till we go out and buy someone is Fabinho. Fabinho या is great. He's a world class player, but Fabinho के defense में आने से what we're missing now is that midfielder who is a shield to your defense and who's not only a shield to your defense, he will win you balls, he will play those passes. जो अब जो है ना, obviously we have Thiago in and hopefully he stays fit, but it's a double blow in my opinion. Losing Van Dijk and having Fabinho back in defense. या आपके, या you probably have two holes in your team. But I mean, yeah, I would say realistically, before the season started, and assuming people would have, people like Van Dijk and Allison would have stayed fit for 70-80% of the season, I was quite confident of putting up a really good title defense, and even quite confident that we could perhaps do another year or at least be up या thereabout. But I think now it's been blown open. I think someone like Van Dijk is irreplaceable. Fabinho, I hope, I hope to God Fabinho can stay fit and keep performing like he's या been performing at centre back. But it's just a monumental loss. I just hope I think मेरे ख्याल है इसकी बहुत अच्छी summary ये है. We'll probably just have to do a 2013-2014 keep outscoring opponents. that's that's ना the बिल्कुल. that's perhaps the one thing that we can do to overcome this. But yeah, I think the title race right now it's been blown wide open, wide open. बिल्कुल राइट. Yeah, I think that's very true what Imad said, and I think जो अभी सिचुएशन है, I think सारी टीम्स की अभी काफी चीजें अभी obviously बहुत अभी शुरू ही है, बट या कि अब वो डायरेक्शन थोड़ी थोड़ी नजर आना शुरू हो गई है कि सीजन किस डायरेक्शन में जाएगा. जाहिर है जो अनफॉर्चुनेट अनफोर्सीन चीजें हैं उस पे तो हम कुछ नहीं कह सकते कि जैसे कोई मेजर इंजरी कहीं हो जाए, बट हाँ जनरली वी आर सीइंग द डायरेक्शन we are going in. It was very unfortunate today that Saad had this internet issue and he could not join us. He was representing Manu and we could not take his input. But yeah, we can definitely do it next time. And guys, Kashif, Lateef, Aditya, Emad, Tariq bhai, it was a pleasure having you guys, and it was a good discussion. It was a lot of fun, and we'll definitely be doing it regularly. And क्या बोलते हैं इसको करते रहेंगे. लतीफ से तो खैर हमारा मजाक चलता रहता है, तो वो भले डिसएग्री कर सकते हैं जितना भी चाहें जहाँ पे भी. But ये कि yeah, it was a pleasure, guys, and thanks to all of you for joining, and definitely we'll do this again sometime. Sure, sure. Thank you so much. Bye, everybody. Sure. Thanks for Thank having you. me. Bye bye. Okay, guys. Bye, Pleasure everyone. talking. Thank Pleasure you. talking to you guys. Bye. Thank you. Take care. Bye. Bye bye. Same here, guys. Take care. Bye.
So guys, this was the Big Six review. Unfortunately, Saad was not there from Manchester United to join us, and he had some internet issues. But definitely, yeah, we can do this next time. There was, I think, the initial portion of the show was mainly taken by VAR, and which is obviously was very important to discuss. And yeah, generally we discussed how the teams are doing in the first few matches which have been played. So yeah, things are looking very interesting. Champions League का भी first round हो गया है, उस पे तो अभी discussion नहीं हुआ है. But yeah, I would just say कि without the fans, the games are looking very dull. But yeah, we cannot do anything. The times are tough. So yeah, let's see, and definitely we'll plan something on the Champions League also, and we're going to come back with it. So till then, from Sports Vision and your host Sami, take care. Bye bye.